The topic which we are going to discuss today is management of exotic animals in tropical climate. So here this topic contains two very typical words. One is exotic animals, another is tropical climate. So based on these two aspects, you have to cover this topic. Okay. Diagram. So this is the India. Okay. So this is the equator. This is the meridian line. Okay? So anything falls between on either side of the equator, we call it as a tropics. Okay. 23.5 degree north and south, we call it as a tropics. Since India, it does not fully covered by the tropical climate, rather part of it. It's more towards the north. So that's why even if you see the Indian map also, up to Gujarat, you can very well see that above which it is more towards the what you can say prime meridian, and below you can say east and west, that is the northeastern states as well as Gujarat, and below is comes under the typical tropical climate. So that's why in the north you might be observing both the extremities. During the summer you will see the typical summer. Okay, in the winter again you will see typical winter. The more you come towards the down, okay, the temperature is all the time high, but it is not like highly variable. It's not that highly variable. You will not see any extremes. You will see almost all physical parameters or meteorological parameters more or less constant. Okay. So if you see this map, certainly you will understand that why loose housing system and why indoor system of housing has come up in India. Like if you go to any European climate like this, or if you go to southern part like this, Australia and all, the climate's more or less cold only. Okay. And their method of housing is very typical. That is a indoor, complete winter will be there. So that's why the density of the livestock within the building will be very high, and there is a less exposure to sun for the animals. Everything has to be kept inside the building in order to protect from the other extremities. But in India, if you start journey from the top to bottom, the climate varies entirely. Okay, so that's why depending upon need based, all our animal rearing system, housing system, feeding system are changing with the area. So in the tropical climate, whenever you use the word, this tropical climate is not so serious when it comes to our animals. Our animals means livestock which are born and brought up here, which have been evolved here itself. Okay, they have been adapted. So adaptation, when you read in the physiology or other courses, you will understand what are those modifications. Okay, different modifications which have taken place with the evolution. Okay, but when it comes to exotic animals, then all this issue arises. So keeping this tropical climate in view, okay, so we will discuss exotic animals. Exotic animals means anything from the outside. Anything from the outside. Here in India, during the White Revolution, okay, and also earlier to that also, people tried to increase the milk production by different ways and means. And once they learned that the potential or capability of our indigenous animals is not up to the mark, however, on the other side, the demand for the milk was very high. So in this process, they introduced the crossbreeding, and they brought different exotic animals from the different countries. Okay, and from the way these animals have been brought, they are very typical temperature. Means throughout the year, it is almost like not more than 7 degree, you can say, not more than 7. Always it is below 0 degree. When such breeds were brought here, though they survived, but the production potential drastically reduced. So in order to understand this, what are the different management you have to give during the tropical climate? First, you should understand what are their uniqueness or the lacunae. Okay. So if you see this table, dewlap, okay, color, body size, okay, wedges, ears, air coat, navel stuff. If you see all these physiological features of these animals, if you compare,
the way they are present in the local animals, they are going to be useful for the heat dissipation. Or on the other side, these structure not much predominant. Okay, it means that whatever the animals we have today, which are locally evolved, they are already well adapted. However, the production potential certainly is not up to the mark, and it is inevitable to keep these exotic animals. If you see the exotic animals, the dewlap, it's a less developed color. They are more like towards the white or brown or some other colors, which are not so much, you can say suitable to the Indian climate because of, not because of color, because of this hair coat. Hair coat, if you see, coarse and longer. But in case of our animals, it is soft and shorter. Okay, not because of color, it's mainly because of hair coat. Size, body size, large. Okay, if you take our own animals, local breeds, cattle itself, you take the largest breed, we say it as a Conkerage. Okay, but still the Conkerage, the weight and the weight of the bronzes or HF or Jersey is uncomparable. They are so big. Okay, what we have today, all are crossbred animals and their body weight may go up to 450 kg. But originally, if you see these exotic animals, they are more than 600 kg. Okay, they're really gigantic in nature. Wedges, okay. Wedges means they are the body features which indicate the digestive system, respiratory system, okay, reproductive system. We have 3 edges, which somebody else will talk. I'm not going in detail. Okay, all these 3 wedges are more predominant, means they have got capability to take more feed and digest. They have got a capacity to take more this oxygen and to survive, and they've got the capacity to consume very quickly, and that calving a year or every year is more predominant. Okay, it means that animals are perfect. Okay, but only thing is that such animals, when they are brought here, the whatever the things they require may not be suitable to the tropical climate. Okay, so all these exotic animals, when they were brought, they did not adjust to our climate because of so many reasons, which I'm going to discuss. Feed and water intake, the way we rear our animals or the way we have resources. ठीक है, जिस तरह से इंडिया में resources है, उतना रिसोर्स उस एनिमल के लिए सफिशिएंट है नहीं. ओके, आप एनिमल गुड क्वालिटी का लाए हैं, बट अकॉर्डिंगली यू आर नॉट एबल टू गिव because their intake is so high, so you cannot provide it. So that's why the one weakness when you bring these such animals. Preference for the shed. आप most of you might have come from the rural area. जितना भी हम लोग scientific बात करते हैं with respect to animal housing, they are existing only still in the farm condition only, government farms only, private farms only. Still in the rural area, if you go, the farmer who is keeping 2-3 animals, they are just like the need-based housing they are making. Okay, whatever the space they are available, with that they are going to make small infrastructure to keep 2-3 animals. Okay, but these animals have a preference for the shed. Okay, so they need pakka infrastructure. Heat tolerance, as I told in the beginning itself, they are less because of less wetlands. Disease resistance, they are again directly or indirectly they are dependent because of climate. The probability of occurrence of disease will be more in exotic animals compared to our animals. Okay. Adaptability, again, it depends upon the heat tolerance adaptability. That since these animals cannot be changed genetically, they have to survive with the existing climate. So with that, they are poor adaptable to our climate. So maternal instinct, of course, it is less, due to which we are taking advantage with respect to weaning, but with respect to other aspect, we are not able to manage it. Okay, so estrus behavior less pronounced. Okay, less pronounced. These are the difficulties which I'm going to discuss here, because if you know the problem, then only we can address the problem in the tropical climate. जिस तरह से animals estrus exhibit वहाँ करते हैं temperate climate में, जहाँ ये born and brought up है, evolved है, वहाँ से भी काफी ज़्यादा problematic है. They are not able to express the stress behavior. क्यों नहीं है? Because of climate. So once it is there, the problem is identified, then you have to address accordingly. Okay? And roughage digestibility. In our animals, you can make the animal to survive by simply providing the ragi straw, paddy straw throughout the year.
Even our animals can withstand more than 24 hours without water also. But these animals, next to impossible. If you don't provide, suddenly these animals will collapse. Okay. Dung, tight and loose. How it is related to topic today? Because of parasitic load. When you see dung of cattle, because of less water intake, this dung is all the time tight. But in our animals, they keep on eating. In case of exotic animals, the dung is loose. So these are the differences we generally see between the exotic and the local breeds. Then how is the problem? Heat humidity is combined with low air movement, direct sun exposure, poor ventilation in the sheds. They are all detrimental to the dairy animals, particularly in the tropical climate. Because the way we provide the infrastructure, it is always a need based. Need based में सर जितना उनके पास जैसे घर है, घर के बगल में लीड टू टाइप ऑफ हाउसिंग, उसी को उन्होंने 2 पोल्स डाला है, फिर उसके ऊपर एस्बेस्टस या एल्यूमिनियम शीट डाला, उसके नीचे खड़ा कर दिया. कभी कभी झोपड़ी बना दी, उसके नीचे खड़ा कर दिया. उसमें हो सकता है डायरेक्ट सन एक्सपोजर मिल रहा होगा, नहीं भी मिल रहा होगा, वेंटिलेशन प्रॉपर्ली हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, nobody knows. But as and when if you make such infrastructure for these animals, then all problem will rise. For our cattle it's fine, our cattle is fine, but when you try to keep such high potential animals in the poor infrastructure, certainly they are going to be affected. So then what is the solution for this? We will discuss later. If you see agroclimatic zones, okay, so here I'm not going in detail, but these are the 15 agroclimatic regions which are generally required for the animal husbandry or for the agriculture purpose. Okay. So in some books, even you might have discussed about the animal distribution based on these agroclimatic zones. Just based on the temperature, humidity, wind speed, rainfall, ये zones बनाया गया है. उसमें अलग-अलग species very typically they are distributed. A typical pattern है, which I am not going to discuss. Okay. Why this I have brought it here means just for the easy understanding, because what I am going to show next slide is requires this slide. Okay, so this is a type of classification based on the climate for the agriculture and animal husbandry, but this much detail still we are not able to address. So broadly, what we have done, we are trying to address all the rearing system, housing system. So we broadly consider these 4 regions: northwestern region, okay, that is almost like Rajasthan, part of Punjab, Gujarat, okay, eastern region, northeastern region, southern peninsular region, and northern temperate region. So these are the broad 4 classification under which you have to address these exotic animals. If at all, if it is to be kept, then you have to take care of these animals accordingly. If you are maintaining cattle like Jersey, HF, Red Sindhi in northwestern region like Uttaranchal, okay, Himachal Pradesh, all these areas, Jammu, Kashmir, the issue is not so serious as it is seen in the UP, Madhya Pradesh and southern part, because the climate is very, very low there. Certainly they are suitable, but there are other issues. Okay, वहाँ आप एक ठीक से छोटा सा घर बना के वहाँ रखा जा सकता है, but if you try to keep them in a very typical animal house made for the local animal में कैसे बनाते हैं पहाड़ में, आपने देखा होगा नीचे एनिमल शेड होगा, ऊपर उनका घर होगा. तो नीचे जो शेड होगा उसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड स्पीसीज सबको डाल देते हैं, कमरा और खिड़की दोनों बंद कर देते हैं. वहाँ वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, और डंग रेगुलरली नहीं निकालते जिसकी वजह से पैरासिटिक का प्रॉब्लम है. बट सेम एनिमल्स व्हेन यू, वहाँ और एक प्रॉब्लम है इन फीडिंग में वहाँ आपको ग्रेजिंग लैंड मिलेगा ही नहीं, और उतना कॉस्टली फीड आप खिला भी नहीं सकते हैं. सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. वही चीज अगर आप नॉर्दर्न टेम्परेट में अगर आ जाएंगे, नीचे थोड़ा सा लाइक सदर्न रीजन में आ जाएंगे, यहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पक्का बनाना पड़ेगा. पंजाब में जाएंगे तो बहुत पक्का बनाना पड़ेगा. दो यू हैव ए लिबर्टी टू फीड good quality of feed and fodder, but housing you have to make accordingly. So that's why this particular slide I have showed you. So now we all understand that what are the weakness of the exotic animals and what are the characteristic of tropical climate. दोनों हमको इनोवेटेबल है. हमको क्रॉसब्रेड एनिमल रखना भी है और प्योर एचएफ, जर्सी, रेड सिंधी ये सब रखना भी है, क्योंकि दूध हमारे लिए रिक्वायरमेंट है. और एट द सेम टाइम ट्रॉपिकल क्लाइमेट इट्स इनएविटेबल है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. सो बोथ थिंग्स हैज टू बी टेकन टुगेदर बाय अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम. हम जब दोनों इनएविटेबल है, देन यू हैव टू
search for ways and means to keep the animals in a comfortable position. ये स्लाइड भी मैंने पहले दिखा दिया था, लास्ट स्लाइड में भी मैंने कंफर्ट जोन का और थर्मोन्यूट्रल जोन का दोनों चीज डिस्कस किया. कंफर्ट जोन मींस वेयर एनिमल डज नॉट स्पेंड एनी एनर्जी एट ऑल, व्हिच इज अ रेयर सिचुएशन, ओके, at least in the tropical environment, but thermoneutral zone certainly it is there. So if at all, if you are going for a proper infrastructure, तो इसीलिए आपको हमेशा कंफर्ट जोन का जो टेम्परेचर है फॉर द डिफरेंट ब्रीड्स यू नीड टू रिमेंबर, सो दैट यू कैन वर्क आउट अकॉर्डिंगली. अदरवाइज क्या होता है, बड़ा बड़ा डेयरी फार्म में बहुत सारी चीज करने के लिए कोशिश करते हैं, बट छोटे छोटे फार्म में ये सब नहीं हो पाता. इन द लास्ट क्लास आल्सो आई टोल्ड यू, सिंपली अगर टेम्परेचर ज्यादा है करके आपने बहुत कुछ देना चाहते हैं, कभी कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कुछ मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं, दोनों ठीक नहीं है. जो टू टेक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा. दैट्स व्हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स इज ऑलवेज टेकन एज अ टूल और असेस द स्ट्रेस ऑन द एनिमल. ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. जब तक आपका एनिमल और आपका THI इंडेक्स विद इन द एनिमल शेड इफ डज एज लॉन्ग एज ही डज नॉट कम अंडर 72, देन आपका एनिमल में सफरिंग रहेगा. तो इसलिए वो ये सब मॉडिफिकेशन जो भी करेंगे समर मैनेजमेंट में, जो भी हमने डिस्कस किया था, दे शुड ऑल डायरेक्ट टू रिड्यूस द THI लेस देन 72. ओके, सो योर मेन एम इज टू रिड्यूस द 72 THI. तो व्हाट आर द वेज एंड मीन्स? आई विल ट्राई टू डिस्कस वन बाय वन वेरी स्लोली. फर्स्ट इट इज ब्रीड. ठीक है, जो ब्रीड आप ले आए हैं एग्जोटिक, प्योर एग्जोटिक एनिमल्स, एक टाइम में रिलीज हो गया, वो सब रख नहीं पाएंगे. तो इसलिए व्हाट आर द, देन वी वेंट फॉर द क्रॉस ब्रीडिंग. कुछ ब्लड एग्जोटिक को लोकल एनिमल को डाल के, सो इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर ब्रीड और प्रोजेनीज और F1 by adding our local indigenous breeds to some extent. Similarly, modification or creation of housing and also provision of feeding as per the need-based health management and management in general. So these are the 5 ways by which you can address the exotic animals management in the tropical climate. जैसे मैंने शुरुआत में बता दिया था, different species distribution जो है, they are all according to the agroclimatic zones. So there is a distribution of sheep or goat, distribution of cattle or camel. They are all suited to a particular climate. आप हो सकता है camel आपको दिल्ली में भी मिलेगा, आपको हो सकता है बेंगलोर में भी मिल जाए, but वहाँ जो भी population होगा, there are only a few are, you can say they are not basically for the reproduction. 2 मेल ले आए, आपको बोला कार्ट को चलाने के लिए आप यूज कर रहे होंगे, कई आपको रिक्रिएशन के लिए यूज कर रहे होंगे, बट विद रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन जो कैमल इंडिया में लाके रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं वो नहीं पाएगा. ओके, सो इट मींस दैट रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो इट्स इनकम्प्लीटनेस. सो दैट्स व्हाई जितना भी ब्रीड है जो टेम्परेचर बेस्ड अकॉर्डिंगली वो एग्जिस्ट करता है. सपोज इफ यू टेक दी गोट ब्रीड्स, ओके, पश्मीना गोट इज ओनली इन द नॉर्थ टेम्परेट अवेलेबल, ओके, इन कश्मीर इज अवेलेबल. सिमिलरली कोर्स वूल का जो आएंगे तो सदर्न स्टेट में मिलेंगे आपको. आपका नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपका ना वूल क्वालिटी अच्छा है ना वो कारपेट टाइप है, मेनली फॉर द मीट पर्पस. सो लाइक दैट दीज ब्रीड्स हैव बीन इवॉल्व्ड बाय कंटिन्यूअस सिलेक्शन मेथड. ओके, इट कैन बी इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी, बट ये जो भी ब्रीड इवॉल्व हुआ है आफ्टर कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन द ब्रीड. इसीलिए जो भी होगा वो ब्रीड वही जगह में सूटेबल. वही ब्रीड अगर आप दूसरे जगह में लाके रखना भी चाहते हैं, इट इज द एज द सेम प्रॉब्लम एज वी सी इन केस ऑफ एक्सोटिक एनिमल. एक्सोटिक एनिमल में जो प्रॉब्लम आता है वही चीज यहाँ पे आता है. अगर आप मुर्रा, आप अगर क्या कहते हैं नीली रवि, आप पंजाब से हरियाणा से लाके साउथ में रखेंगे तो हो सकता है दे लुक अलाइक, बट विद द टाइम मींस आपका जनरेशन से जनरेशन उसका साइज घटता जाएगा और मिल्क प्रोडक्शन में कम होता जाएगा. ठीक है, so like that these breeds have been evolved after continuous natural selection. Okay, natural selection. So this is the distribution of cattle and buffaloes. So now, as I told in the beginning, we tried to import the breeds from the different countries for the improvement of milk. The few examples I'm going to show you. Ayrshire, which is not so popular breed. Otherwise जितना भी breed है सारे कोशिश किए इंडिया में कि कौन सा ब्रीड हमारे लिए सूटेबल रहेगा फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, एंड वन विच सूट्स टू आवर क्लाइमेट शुड बी कंटिन्यू लाइक दैट. सो अंडर द नेटवर्क प्रोजेक्ट जो काफी पहले उसको एनिमल्स डिफरेंट ब्रीड्स को इंडिया में लाया गया है, जिसमें आयरशायर है, ब्राउन स्विस है, गुरेंसी है, जर्सी है, एचएफ है. ठीक है, रेड एन. बट कीपिंग द प्योर ब्रीड्स is not going to work, everybody understood. Then they introduced this cross breeding.
So what they did, they tried to cross with a different locally available breed. Suppose ये बरेली में भी है, मैंने just I'll give an example. What we call Vrindavani today is a combination of so many breeds. Okay, so it means that they got a good milking potential as well as the thermo adaptable capacity along with the disease resistance capacity. तो ये भी एक approach है in order to keep these exotic animals. बात ये आता है कि simple cross breeding is not the solution. How much blood is to be maintained? That is very very important. Cross breeding तो कर दिया, 50-50 आ गया, ठीक है, that is not going to solve our problem. 75-25 आ गया, that is not going to solve our problem. Further, if you do it again, they will become pure breed. So that's why at third stage we go for the back crossing. Yeah. Like one is freeze evolve. It was evolved from the military dairy farm Meerut. Okay, it was again unplanned. First they were crossing just to see that how they are performing Frisian and Saiwal. So that called as a freeze wall. Okay, so this is also still popular breed. Sunandini in Kerala by crossing brown Swiss, Jersey, and HF along with the local breed. It's called Sunandini. But current freeze and current Swiss from the NDRA Karna, so you all know it. Brown Swiss into Saiwal. Okay, that is current Swiss. And current Swiss HF into Saiwal. So that's the Tharparkar. So these two breeds are again a popular breed. So why they have been done? It's mainly to get the capacity of both the breeds, local as well as mass. So keeping a right crossbred at the right place is the one solution to maintain these animals in the tropical climate. After this breeds and breeding, next comes housing. Okay. Housing भी मैंने पहले ही बता दिया था कि it involves lot of money. It involves lot of money. बहुत सारे चीज आप जो बताना चाहते हैं किताब में पढ़ के जो हम लोग सिखाते हैं वो फार्मर नहीं कर पाता है because it involves. वो सोचता है कि इतना करने से बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ेगा. But when it comes to organized farm, जब आपका animals बड़ा-बड़ा फार्म खोलना चाहेंगे, certainly this housing system play an important role. जहाँ one or two animals hardly matters because the care and management will be so up to the mark by the individual farmer for the individual animals. So everything they will understand what problem this animal is undergoing. So everything they will be knowing it. But when it comes to organized farm, commercial farms, like if you are planning to have 20 animals, 30 animals, 100 animals like that, then housing plays a major role. तो इसलिए आपने देखा होगा हरियाणा और पंजाब में जितना वो लोग हाउसिंग में पैसा लगाया शायद ही किसी और स्टेट में इसको लगाया होगा because they understand that keeping the pure animals, okay, not crossbred, pure animals, उसका फायदा क्या है? Means certainly the milk production may go more than 25 liters per day. So in order to have that much capacity, then you need to have an infrastructure which is once investment. It's one-time investment. So when you come to housing, there are two approaches based on the rearing system. कैसे animal को पालते हैं? तो उस basis में हम लोग बोलते हैं indoor system, outdoor system or extensive system, and another is semi-intensive, semi-extensive or rearing के basis में. But when it come to method of tying रखने के लिए और method of housing basis में अगर आप जाएंगे तो हम लोग जनरली यूज करते हैं loose system और indoor और stall system. ठीक है, तो ये दोनों system they have got their own advantage and disadvantage. Only thing is that you need to understand what is suitable to your area or to that breed is more important. Sometimes हो सकता है दोनों को मिला के हमको फायदा लेना पड़ेगा. Best example just I'm giving you the photograph here at Pantnagar. ठीक है, देखिए एक टाइम में लगा कि since we are keeping the exotic animals, तो instead of having tree in this open paddock, they erected the tall infrastructure. तो इस एनिमल में शेड में कहीं भी एनिमल जाएगा कहीं ना कहीं एक जगह में इसका शैडो पड़ेगा. धूप इधर से पड़े, ईस्ट से पड़े, वेस्ट से पड़े, सो आपका कहीं ना कहीं एक जगह में इसका शैडो पड़ेगा ताकि एनिमल्स एट एनी मोमेंट दे विल गेट द प्रोटेक्शन. ओके, बट दिस डिड नॉट सॉल्व द पर्पस ऑफ फीडिंग, क्योंकि फीडिंग में उनका मेंजर जो है किनारे में था, ऑल अलोंग द वॉल. तो अलग से इनको फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा बिकॉज जहां एनिमल फीडिंग में आते हैं फीडिंग अल्ले के पास वहां शैडो नहीं था, तो इसीलिए उसको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी a need based, or you can say as per the local situation you have to develop infrastructure. It should not be a blind, or you can say a plain housing which we generally give the guidelines for the teaching purpose. Okay, housing design and orientation, ये repeatedly हम लोग बताते हैं east west orientation. Why east west orientation? If you come to south, east west
orientation may not be so what you can say applicable here, because you're purely indoor system. जहाँ जिस तरह से जगह है उसी के हिसाब से लोग बनाएंगे. हो सकता है उनको नॉर्थ ना ईस्ट वेस्ट बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि जगह ही नहीं उस डायरेक्शन में. तो नॉर्थ साउथ they can very well make. It's not that they cannot make. Only thing is whenever we talk about loose housing system, जहाँ high temperature होता है, high humidity होता है, जहाँ हवा का जो स्पीड है काफी ज्यादा होता है, वहाँ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन काफी कंपलसरी होता है. वाई मीन्स ईस्ट वेस्ट बनाएंगे तो आपको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट इट नॉट फॉल इनटू द एनिमल हाउसिंग. ठीक है, शेड के अंदर नहीं पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम इन एंड अराउंड एरिया में जो भी धूप पड़ेगा उससे द शेड इनसाइड विल गेट ड्राइड अप वेरी क्विकली. और हमारा इंडियन क्लाइमेट में तो द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज मोस्टली ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट, बट इट्स जनरली इन द सेम डायरेक्शन. तो अगर शेड आप नॉर्थ साउथ बनाएंगे तो आपका हवा थ्रू एंड थ्रू जाएगा. बट वो सिचुएशन हर जगह. सो व्हेन इट कम्स टू रूफिंग मटेरियल, सो कुछ चीजें ऑलमोस्ट आउटडेटेड है लाइक एस्बेस्टस टाइल्स, बट दिस thatch roofed as well as this aluminum sheets still there in vogue or in practice with minor modifications. Thatch roof पे भी बहुत सारे मटेरियल ऐड करके उसको ड्यूरेबल बना देते हैं. और ये एल्यूमिनियम शीट को बहुत सारे कोटिंग है, थर्मो रेजिस्टेंट कोट्स और विद रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी पेंट जो डाल के तो वो लोग आजकल यूज कर रहे हैं. तो सेम थिंग कैन बी यूज्ड सो दैट माइक्रो क्लाइमेट इज ऑलवेज मेंटेन्ड एज पर द कंफर्ट जोन. So far we have discussed different types of housing system to take care of the exotic animals. However, you try to make a perfect housing for the exotic animals, still there is a problem of summer stress during the peak temperature. So before going any summer management practices, first you have to assess through THA whatever the building you have made, what are the common summer management practice generally followed in the peak summer are provision of shade. Suppose if you have a loose system, so there should be provision of tree or the shadow area in the open paddock. So this shadow can reduce the heat load by 30%. Trees are an excellent source of shade, and if you given a choice, cow will generally seek the protection of tree rather than the man-made infrastructure. What I mean to say is that the natural shadow, natural shade given by the tree is more beneficial than the what infrastructure we are going to provide in the open paddock. In addition to the provision of shade, we can also provide the windbreaker. So this is not like overnight job. It has to be done well in the beginning itself, because each and every trees which we are going to plant in and around the building will take on its own time at least 5 to 6 years. So naturally, this has to be well planned to take care of these windbreakers that will indirectly help in reduction of the heat stress. In addition to the provision of trees and windbreakers in outside the building, we need to provide some of the heat dissipation or heat ameliorating measurements well within the building. The most common and simplest method is to provide the fans. They should be placed at a distance of 10 times their diameter position so that they blow air. If you have a liberty to spend little more amount, you can think of high pressure foggers. So this is nothing but they disperse very fine droplets of water which quickly evaporate and cool the surrounding area. A ring of fog nozzles is attached to the exhaust side of the fans, and then the cooled air is blown over the animal's body. So these are called foggers. A misting system is nothing but a series of misting nozzles placed in a sequence in a tubing and pressurized to provide fine spray water droplets between 15 and 50 mm in size. A mist droplet is larger than the fog droplet. So the fogger is more advantageous than the misting. The most conventional method is the sprinklers. So although they help in the cooling of the body system, but it uses large amount of water. And so these if these sprinklers has to be provided, then you need to provide some automatic management systems wherein so it can switch off and switch on at a intermittent or the defined time, so that the quantity of water wasted will be reduced, and also it will help in the proper heat dissipation. Or otherwise, if it is continuous bringing water over the animals, may not be beneficial to the animals. So still, if their dairy farms are too bigger, then you can think of the
tunnel ventilations, wherein we need to provide these air inlets at the one end of the barn with all of the exhaust fans located on the opposite side. Means the air enters from one side and exits from the another side, but it is a costly affair, so only one can think of in the bigger dairy farms. Next comes drinking water. If you see the requirement of water for these animals, right, it depends upon the milk production. But the quantity of water required for exotic animal is uncomparable with the local animals. Uncomparable with the local animals. Reason ये है, one is body mass index, second is the size and other activities which help in thermoregulation mechanism. वो सब इस animal में मजबूरी है, क्योंकि since these animals always undergo stress, so naturally उसका heat distribution ज़्यादा होगा, तो पानी का requirement में comparatively बहुत ज़्यादा रहेगा when it comes to the exotic animals. इसलिए so you have to see that the way you give water, that plays a major role. Okay, so you have to keep that water in particular place where animals congregate, और जिस जगह में वो जाके resting के लिए prefer करता है, because animal का एक tendency है, it should be kept in such a place where they congregate more. हो सकता है shadow tree के नीचे हो सकता है, okay, जहाँ wetness of the floor ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ हो सकता है dry ज़्यादा होगा, any reason, it could be any reason, जहाँ आपका animals लगता है यहाँ ज़्यादा आके खड़े हो जाते हैं, उसी जगह में you have to provide the water. Second is, if you try to provide water continuously, animal may not like to have water. Okay, जिस समय practically जो thirsty होंगे, तो उसी समय वो animal पीना पसंद करते हैं, उसी समय पीना पसंद करते हैं, otherwise पीना करते हैं. But एक animal का tendency, even human beings का, देखिए जब पानी पीते हैं तो सबको प्यास लगता है. Okay, उसी तरह से animal का भी nature है. जब पानी सामने रहेगा तो if it continuously, if it available water, the quantity of water consumed by the animal is comparatively less when you try to provide the water intermittently. Intermittently मतलब जैसे पता है कि 9 बजे पानी उस water ट्रक में गिरेगा, तो animal will just they run to that place and even they play, they have water. This deep well water means those bore wells which are like more than 300-400 feet depth जो आता है पानी, समर के अंदर वहां से जो फ्रेश पानी आता है तो always they are cold compared to the normally available on the overhead tank. Similarly, winter में वही water lukewarm होता है. So if you try to provide such water from the deep borewell water directly to the watershed, the quantity of intake will be more in case of exotic animal. ऐसे करने से they will take more water. With that, the thermoregulation mechanism is also being maintained properly. Cleanness of the water trough, ठीक है, जैसे हम लोग disinfectant lime से करते हैं, so that has to be done. Rest all it is same. See here one more point. The grazing cattle show the peak drinking activity after weaning, milking before sunset. So these are the typical. बाद में भी हम discuss करेंगे with respect to feeding, but हम लोग water intake का जैसे अगर हम देखेंगे, the grazing cattle मतलब maximum animals जो grazing में रहते हैं या loose system में रहते हैं, उनका एक typical पीने का time होता है generally before sunset. ठीक है, मिल्किंग के बाद उनको पानी पीने के लिए मौका दे देंगे तो दे ड्रिंक ह्यूज वाटर. ओके, इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड ड्राई मैटर इनटेक इज वन ऑफ द पैरामाउंट इंपॉर्टेंट. ओके, सो हम लोग लोकल एनिमल में जितना भी ड्राई फॉडर ज्यादा देते हैं, ग्रीन फॉडर कम देते हैं, ठीक है, बट इवन देन उनका वाटर इनटेक कंपेरेटली लेस व्हेन कंपेयर्ड टू दीस एनिमल्स. बट इसमें अगर आप इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रॉ इनटेक और साइलेज इनटेक, द वाटर इनटेक विल बी सर्टेनली मोर, सो यू हैव टू प्रोवाइड accordingly. So constant ratio of water intake to the dry matter should be maintained. This is one important issue with respect to water. Next comes feeding. Feeding is the most important activity in the livestock, and they spend maximum time. Okay, they spend maximum time in feeding, and this feeding behavior is the one which decides the many other factors. So, but what are the thumb rules? Our thumb rule क्या है dry matter intake का? 2/3 roughage, 1/3 concentration. Roughage में भी 2/3 dry and 1/3 green. But ये situation हम लोग कहते हैं, but practically when you see in the farm condition or in the rural condition, it is not possible. जिस समय गर्मी ज्यादा होगा उस समय ग्रीन फॉडर अवेलेबिलिटी कम रहेगा, तो उस समय ये thumb rule 1/3 green out of 2/3 roughage पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ग्रीन ही नहीं अवेलेबल नहीं. दैट्स कॉल्ड लीन सीजन आल्सो. उस समय मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है.
तो उस समय आपको साइलेज आपके पास रहने ही चाहिए. If you can't, if you are pretty sure that you are not able to provide green fodder during the peak summer season, ठीक है, उस समय then you have to make some alternate arrangement by provision of silage. If can't provide at least other part of the year, you should provide silage in the peak summer season. उसी तरह से ड्राई फॉडर जो है, which is again a costly affair. पहले तो एक इसको कंसिडर करते थे as a agriculture waste, but nowadays whether it's a ragi straw, paddy straw, they are equally important because of this मैकेनाइजेशन. काफी सारे सिस्टम्स आ रहे हैं, उसको आराम से हार्वेस्ट करके स्टोर किया जा सकता है और इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका कास्ट भी बढ़ गया. तो ये ड्राई फॉडर जो है हम लोग विंटर में ज्यादा बढ़ाना चाहिए, दैट टू एक्ट एज ए बेडिंग मटेरियल एज वेल एज ए ड्राई मैटर इनटेक. तो इस थंब रूल को हम लोग याद में रखते हुए अल्टीमेटली ड्राई मैटर को हमको याद रखना पड़ेगा. Any means the total dry matter requirement of the exotic cattle should be met. If you think that by providing extra concentrate the dry matter is met, then you have to provide concentrate. अगर आपको पता है concentrate देना मजबूरी है, आपको कैसे concentrate देना, then it becomes inevitable. Otherwise, if you try to provide too much of concentrate in order to fulfill the dry matter, thermal regulation mechanism बहुत बढ़ जाएगा because of metabolic activity. तो आपको उसी concentrate को you may have to provide in the wet form, okay, in the late night or in the early morning, okay. वो भी क्यों मैं बाद में बताऊंगा. But our main aim is to take care of the dry matter intake in these exotic breeds in the tropical condition, because उसी समय इनका intake काफी हद तक कम हो जाता है. So when you want to maintain these type of thumb rule, you should understand that what is your fodder requirement. एक thumb rule के सबसे एक average a cattle, particularly exotic cattle, this may eat 40 to 45 kg green fodder, so along with 3 to 4 kg dry fat. तो आपके पास जो अवेलेबल होगा उस चीज को आपको देना. अगर ग्रीन फॉडर अवेलेबल है, then you can very well provide green fodder in the mid of the day. But आपके पास ड्राई फॉडर अवेलेबल है, ग्रीन फॉडर कम है, then you have to see that this dry fodder is provided how best in the early morning, in the late evening, or by making some alternative by wetting the dry fodder, or by mixing with the concentrate, or by mixing with the. But main aim is to provide them or make them to take highest quantity of dry matter in the exotic breeds. This is the main our motto. So in this cattle and buffalo, the dry matter intake is mainly prompted exotic animals. But how you can make them to eat? जैसे पता है कि आपको जब परेशान रहते हैं तो खाना पसंद नहीं आता है. It is with even animal also. If you are not in a comfort position, you don't feel eating. But anyway, you have to make them to take the required dry matter intake based on their production potential. So उसके लिए कुछ मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, वो हम एक-एक करके डिस्कस करें. Behavioral pattern means how they behave accordingly you can change your management practice. कैटल को अगर मौका दिया जाएगा, उनका एक सिस्टम है सर्केडियन रिदम, मतलब ये हमेशा खाते रहते हैं, बट खाने का भी एक ये फ्रीक्वेंसी है. तो उस फ्रीक्वेंसी को आपको जस्ट समझना चाहिए. मैक्सिमम ग्रेजिंग अकर्स नियर डॉन एंड इन द लेट आफ्टरनून और जस्ट नियर द सनसेट. तो सनसेट कैन बी टेकन एज ए बेस्ट टाइम टू फीड दीज एनिमल्स. बट आप गवर्नमेंट फार्म में जाएंगे तो सारे एक्टिविटीज भाई 5 बजे बंद हो जाते हैं, जितना है वो सारे फीड डाल के चले जाते हैं. बट व्हाट इज द सिचुएशन वी डोंट नो. बट कंट्री लाइक ट्रॉपिकल, ओके, वेयर देयर इज अ वेरिएशन ऑफ द लाइट, ओके. आप साउथ में जाएंगे तो वहां ड्यूरेशन ऑफ द लेंथ इज डिफरेंट है, नॉर्थ में जाएंगे तो ड्यूरेशन ऑफ लेंथ है. तो अकॉर्डिंगली यू शुड नॉट फिक्स एज अ तब दैट 5 बजे हम इसको ग्रीन फॉडर दे देंगे. It is a sunset. It is not the time. It is the sunset or the light, presence of light will encourage them to eat, and such part you keep it in mind, and accordingly you have to change your the feeding time. Okay. One more thing is that अगर उनको पूरा आर्डली मतलब अपनी मर्जी के सिर्फ कार्य के लिए, जिसका नीड बेस्ड फीड इनटेक, अगर उनको आर्डली में अगर खाने के लिए अगर आप मौका दे देंगे, so then they expect circadian rhythm and they eat in periodically. उसी का एक फोटोग्राफ मैं दिखा दूंगा. So you can see this one. तो अगर आप उनको 5 बजे जिस समय मिल्किंग होता है, उस समय मैक्सिमम एक्टिविटी उनका बढ़ जाता है. इसलिए जैसे 4 बजे के बाद एनिमल जो लेटा हुआ एनिमल्स जस्ट उठने लग जाते हैं, डेफिकेशन होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है. अगर उस टाइम में मेजर में अगर फ्रेश खाना मिलेगा तो नेचुरली दे वुड लाइक टू ईट इट मैक्सिमम. फिर उसी का एक्टिविटी धीरे धीरे फीडिंग कम हो जाए. फिर 4 बजे
जिस समय अगेन मिल्किंग के लिए एनिमल हम लाते हैं तो अगेन दे विल गेट एक्साइटेड, अगेन दे स्टार्ट ईटिंग द फीड. यू आर गेटिंग दिस ग्राफ, यू सी एट 5 o'clock, then again at 4 o'clock. Again you see before evening these activities, sunset what we call it, this activity increases. इस एक्टिविटी इस पीरियड को हमको ज्यादा मौका लेना चाहिए. एट द सेम टाइम फिर उसके बाद फिर एक लीन पीरियड आता है. दिन रात में बिफोर स्लीप these animals again they go for grazing. This is the place or the time where you have to harvest maximum. ये दोनों इसीलिए हम लोग ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुके हैं क्योंकि मिल्किंग टाइम में उस समय हम लोग दाना कॉन्सेंट्रेट देते ही देते हैं, फ्रेश खाना देते ही देते हैं बिकॉज ऑफ टाइमिंग्स ऑफ द ऑफिस और कैसे लेबर. ये दोनों हम बाय डिफॉल्ट वी आर टेकिंग केयर. बट these two places where you feel that if it is missing then it has to be provided. Okay, so this is what I wanted to say, discuss based on their behavior. Okay, frequency of feeding. Frequency of feeding means उसको एक बार देना चाहिए, 2 बार देना चाहिए, 3 बार देना चाहिए. प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा तो 2 ही बार देना बेटर रहेगा बिकॉज ऑफ लेबर प्रॉब्लम. ओके, बट इफ यू गिवन ए चांस सो नेचुरली द मोर यू प्रोवाइड द फीड मोर इनटेक विल इंक्रीज. जैसे आप ग्राफ में भी दे सकते हैं, एक बार जब दिया गया सो दैट इज ए लाइटर लाइन, 2 बार दिया गया दैट इज ए डार्कर लाइन. दोनों टाइम में मिल्किंग टाइम में भी ये बढ़ जाता है. अगर वही चीज 2 के जगह में 4 देते हैं तो 2 फेज में फिर इनकी एक्टिविटी बढ़ जाता है. इसका मतलब पर्टिकुलरली द नाइट में अगर उस समय फ्रेश दाना अगर ग्रीन फॉडर देंगे सो नेचुरली ये एक्टिविटी बढ़ जाता है. सो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड ए फ्रेश फीड एट द लेट नाइट और इन द लेट इवनिंग. एटलीस्ट जैसे पोल्ट्री में करते क्या करते हैं, जो फीडिंग ट्रे होता है उसी को लोग रैकिंग इफेक्ट करते हैं, रैक करके फिर थोड़ा सा हल्का सा फीड डाल के चले जाते हैं. तो बर्ड्स को लगता है कि अगेन न्यू फीड हैज बीन poured. Since why that instinct develops, because any animals who live in the social order, ठीक है, उनके पास एक प्रेफरेंशियल ईटिंग, सेलेक्टिव ईटिंग दोनों होता है. वो भी हम डिस्कस करेंगे. इसीलिए जब भी नया फ्रेश फीड डालते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो ये हो, तो उनका एनिमल का इंस्टिंक्ट बढ़ जाता है, देयर बाय ड्राई मैटर इनटेक बढ़ जाता है. सो यू सी दैट ड्यूरिंग द समर और इन द ड्यूरिंग द विंटर इस एक्सोटिक एनिमल्स को आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ applying feed can be increased. If not 3-4 times, at least 3 times you can very well go for the increment. Overcrowding. जैसे समर में if you think that your dairy farm capacity is 70 but you are kept under during the other part of the year, but this time you should see that those overcrowding should be avoided. क्यों? क्योंकि overcrowding not only with respect to floor space requirement but competition exists for the intake of the feed. खासतौर से लूजिंग डोजिंग सिस्टम में जहां एनिमल्स आर नॉट टाइट, तो जो भी डोमिनेटिंग एनिमल होगा दे विल ट्राई टू ईट एज मच एज पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई यू शुड टेक इट. देन मेथड आर फिजिकल फॉर्म, दैट कैन बी कॉन्सेंट्रेट और दैट कैन बी ड्राई फॉडर और दैट कैन बी ग्रीन फॉडर. हाउ यू प्रोवाइड देम, राइट, दैट विल मैटर. सो पैलेट फॉर्म, मेश फॉर्म, इवन क्रम्बल्स पे कहते हैं, पैलेट को फिर टुकड़ा करके देते हैं, क्रम्बल्स करते हैं. सो द स्मॉलर द साइज ऑलवेज इनटेक इज द मोर. And if you try to give in wet form, it is still desirable for these exotic animals. जैसे मैंने बताया कि these animals have got an instinct, क्योंकि out of 24 hours में 4 hours they sleep, okay, and almost 7 to 12 hours they busy in grazing only. But grazing, active grazing or passive? Active grazing अगर आपको करना है, then you have to see that the fodder or feed which you are going to give should be mixed one. It should be mixed one or chopped one, or uniformity should be there because they exhibit the selective feeding. Selective feeding means there are 2 things. One is अगर मान लीजिए 2 टाइप के ग्रास डालेंगे तो दोनों में एक ग्रास डालता है, that we call it as a selective feeding. Preferential eating means घास तो सेम है, the same fodder you have put. Let us assume that you have put the hybrid Napier, okay. The animal will try to eat the tender leaves only. They will, by leaving the tender the stem part only, it will try to. That's called preferential eating. तो ऐसे करने से लास्ट में प्रेफरेंस करते कुछ फॉडर जो है रह ही जाता है. इस एनिमल में दिस टेंडेंसी इज वेरी वेरी हाई. तो इंस्टेड ऑफ pouring full quantity of fodder in the manger, it should be put periodically in these tropical animals. Okay. Social facilitation means जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे एक आदमी खाना खाने के लिए कहता है तुरंत सबको भूख लगता है. किसी चीज के लिए एक्टिविटी जब शुरुआत होता है तो सेम एक्टिविटी हर आदमी करना चाहता है. तो दैट बिहेवियर आल्सो एग्जिबिट इन केस ऑफ दिस कैटल आल्सो. सोशल ऑर्डर मींस अल्फा बीटा गामा. अल्फा हमेशा एक ही होगा. अगर 20 एनिमल का एक ग्रुप होगा उसमें एक डोमिनेटिंग एनिमल होगा. बीटा
जो सेकंड सब ऑर्डर होगा वो हो सकता है 2 होगा, 3 होगा। ये सब एनिमल्स ऑलवेज दे ट्राई टू डोमिनेट ओवर द अदर एनिमल्स। सो व्हेन लूज सिस्टम में होगा तो उस समय आपका फीडिंग जो एरिया होगा इट शुड बी पार्टीशन। जैसे बफे सिस्टम होता है, आपने देखा एक ही बफे सिस्टम का लाइन लगाओ, उसमें वीआईपी भी है, वीवीआईपी भी है, स्टूडेंट भी है, टीचर्स भी, परेशान हो जाता है हर आदमी। इसी तरह से एनिमल के साथ भी होता है, जो डोमिनेंट एनिमल खा रहा है तो नेचुरली अदर एनिमल्स दे डोंट प्रेफर टू गो देयर। सो यू हैव टू सी दैट such facility should be provided during the summer season where you feel that there is a competition. Okay, wet or cooked feed depending upon the quality of feed. तो even as a summer management, अगर आपको लगता है कि quantity of feed taken by the animal is seems to be highly variable with respect to green fodder, dry fodder and concentrate, जिसकी वजह से ड्राई मैटर इनटेक नहीं होता। जैसे गर्मी में ज्यादा ग्रीन फॉडर खाना पसंद करता है बट उससे ड्राई मैटर कंप्लीट नहीं जा पाता है। सो ड्राई फॉडर खाने पसंद नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि पैसा है। सो इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ कंप्लीट फीडबैक वेयर इन इट कंटेन्स all the nutrients in the single block, so that will take care of the dry matter intake. So mineral blocks, so जहां लगता है कि feed dry matter intake कम होने से naturally there is a possibility of imbalance in the nutrition because the desired quantity जब नहीं खा पाता है so naturally micronutrients हमेशा insufficient हो जाता है। so जिसके वजह से हम लोग you can add the यूरिया मिनरल मिक्सचर ब्लॉक, जिसमें प्रोटीन कंटेंट भी फिल हो जाएगा और मिनरल्स भी build they will bridge the gap such as to be well taken care in the exotic animals. Okay, silage एक टाइम में बहुत पॉपुलर था, फिर उसका cumbersome प्रोसीजर की वजह से लोगों ने फिर इसको छोड़ दिया था, but people are now getting encouraged because it is one of the alternative method to fill the gap of green fodder during the peak summer season. Okay, so there it maintains the water content comparatively more compared to this straw. Okay, क्योंकि आपको इसी को when you try to store it after anaerobic reaction, so this not only become more palatable but also it increases the water content to the animals. Health management, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं, डिसीजेस जो है हाईली वेरिएबल है। टेम्परेट क्लाइमेट में हो सकता है कुछ ही डिसीज होंगे और अदर डिसीज वो नेग्लिजिबल है, बट इन इंडिया में ऑब्वियसली every alternative month there are one or other new diseases, every alternative month one or other problems. पीक समर में लेंगे तो वन इश्यू, पीक विंटर में लेंगे वन इश्यू, रेनी सीजन में लेंगे। So this worms, it is one of the biggest menace in the tropical climate. Okay, so flies again is another issue. अपने गांव में देखेंगे तो थोड़ा सा पैडी स्ट्रा डाल के उसको आग जला देते हैं ताकि धुआं निकलता रहेगा, तो फ्लाइज का प्रॉब्लम है। But nowadays people are even going for the use of the mosquito net also. Okay, so deworming should be the target every 6 months, even if possible 3 times depending upon the endemic area. Okay, vaccination, if not for all the diseases, important diseases, so you should take care of the vaccination part. Other remedial measures, I'm not going much in detail, so it's by and large it remains same as we discussed in case of summer management. Just winter management on that day I did not discuss in detail, but these exotica, since we are discussing about the exotic animals, as a adult animals winter is not an issue, but when it comes to the young ones, since thermoregulation mechanism is not fully developed and if animals farm system is under the looser system, taking care of these young animals and advanced pregnant animals in the calving box is very, very important by providing the coverage or by providing the bedding material. Okay, particularly calves. Okay, when you wean them and if you try to offer a milk separately, so in that case provision of this type of window covers, blowers, proper bedding material and eating the milk at proper body temperature. अगर मान लीजिए गर्मी गर्म कर दिया दूध, उसका कोटा पिलाते जा रहे हैं, but by the time the last calf gets the milk, this milk will be cold. That should not happen. Then it lead to a scour or you can say